People believe in knowing rather than doing. वैसे ही जीवन है, आपको रोज एक होमवर्क भी मिल रहा है, क्लास वर्क भी मिल रहा है, अगर आप उसको नहीं करोगे आप पीछे रह जाओगे. So doing is important than knowing. Tendulkar knows to play cricket, but still he was hungry for 100 centuries. Any hard skills which they should really focus on when they are joining any sales profile? Yeah, coming to sales was like pure economics, commercial side. Actually, FMCG is full of various jargons. Not jargons, I would say abbreviations. So उसको स्कूल आना है क्योंकि उसे मूवी देखने जाना है. मेरा था कि स्कूल जाना है तो मतलब पूरी मस्ती करनी है. तो एनालाइज आप नहीं करना है क्योंकि अब आपके पास टीचर नहीं है. Hello everyone. Welcome back to Wisdom Whispers with Abhishek Mittal. Today we have a guest जो वही मोटिव शेयर करते हैं जो मेरा मोटिव है, which is how to help young professionals. So I would like to welcome Arvind Sukhija ji, who has 30 plus years of experience in sales, sales development, L&D and recruitment with a focus on Indian subcontinent. One of his old friends called him Airwind and he loves that name. So he can share more details about this. So we will hear from his own words कि वो क्यों ऐसा बोलते हैं and why he loves so much about it. So let's welcome Arvind ji to the show. Thank you, Abhishek, for this wonderful opportunity to be there for people and where I can actually share my thoughts, learnings, experiences. Because it's, I believe our life is a relay race. We are here just to pass on the baton. And I beautifully, reminded of a quotation from our launch conference in PNG, give to win. So if you don't give, you don't win. If you just hold it, it's not yours. So you have to give to win. So if I talk about my name being called Airwind, so I have a very beautiful friend and he has been my, friend from ages. So we were together in our primary school, then we were in Saharanpur. Then we shifted to Ghaziabad. He was in my first school. Then I shifted to the another school. He was there as well. Then I went to Lucknow. So he was there as well. पीछा नहीं छोड़ा. पीछा उसने नहीं छोड़ा. मेरी वाइफ बोलती है कि अगर ये गर्ल होती तो तुम दोनों शादी कर लेते. Husband wife. Husband. तो मैंने कहा yes. And if you permit me, I can name him. बिल्कुल. His name is Gaurav Goyal. So we were in Saharanpur, Ghaziabad, Lucknow, and we are very close friends. We share anything on the earth, and we are so close and so dear. So Airwind, because he is a different person altogether. He was the one person who used to bunk classes and I was the opposite. I never bunked any class. So first movie on the Friday was his scheme of things. So उसको स्कूल आना है क्योंकि उसे मूवी देखने जाना है. मेरा था कि स्कूल जाना है तो मतलब पूरी मस्ती करनी है. So पढ़ाई के साथ. पढ़ाई के साथ. पढ़ाई मेरे लिए मतलब I believe in something which is retainership. You have to retain your knowledge. You don't have to cram your knowledge. So that is the differentiator. And I was fortunately a good learner. Even I was having a chat with my primary school teacher, Ma'am Bibha Scott, last evening. So I was able to talk about Brownian motion. So which is part of the physics. So he said कि अब तो छोड़ दो, अब बड़े हो गए हो तुम. तो मैंने कहा नहीं मैम, कुछ चीजें होती है जो याद रहती है. तो that is how. So Airwind came in like air is gentle, breezy, full of very positive vibes, but wind is something devastating. So that is where, and yesterday was Mahashivratri. So Shiva is in that form only. He's breezy, cool, calm, serene. But when you put him into his damaru, he becomes a wind. Then वो नटराज बन जाते हैं. फिर वो विध्वंस भी होता है. So that is why I love this name, Airwind. Nice. Thanks a lot for sharing that story because these are very personal stories and sharing it with the entire audience, it's so nice of you. Thank you. And welcome again to the show, Arvind. My pleasure. So आगे बात करने से पहले सुनना चाहेंगे कि आपकी अपनी करियर स्टोरी क्या है? कहाँ से शुरू किया? क्या कर रहे हो? करियर स्टोरी तो बहुत लंबी है.
So I started my working with Procter and Gamble, Godrej that time, and I was a sales trainee. I was picked up from National Institute of Sales. Mhm. So fortunately for me, I had come with a vision of joining PNG Okay. because we had a shop in our Lucknow days. So my mom had opened a shop just for the sake of supporting the things, and then Ariel was getting launched. Mhm. So Ariel actually is a blue ocean strategy. So if you look at an India market those days, 20 rupee kg surf was the most expensive product. And then Ariel came in and it was 100 rupees Ariel microsystem. So that is how my learning from there, and the kind of input they used to put in, and the kind of strategy they used to have, the even the door-to-door marketing strategy. So it was a very comprehensive combing operation Mhm. to launch the product. So that was the high point for me to love PNG as an organization. And with that vision and mission, I had actually joined NIS, and fortunately, I got through. Lovely. And after that? After that, I started working with PNG. Initially, I was in Ghaziabad, then I was in Aligarh. I remember, when I started working, so my boss, Mr. M.K. Batra, Mohinder Kumar Batra, he's still in touch with me. Mhm. Rather, we are in touch with each other. He is not in touch. I am rather following him. So he used to, take me like a very, like a son actually, Uh-huh. because I couldn't understand the functioning because I was a science student, and coming to sales was like pure economics, commercial side. Uh-huh. So I used to even cry, come back home and cry. एंड अभी भी बात होती है तो तू रोता था, मैंने कहा हाँ सर, मैं मेरे को समझ में ही नहीं आता था बिकॉज अब वो कोई रास्ता भी नहीं था, हम्म। तो यू कैन ओनली क्राई बिकॉज अब व्हेन तो यू समुद्र डोंट में कूद गए हो, कूद अब गए अब तो तैरना सीखना ही तैरना पड़ेगा, सीखना राइट? पड़ेगा। सो शुरू के 2-3 महीने बहुत डिफिकल्ट थे बिकॉज डेटा भरो और बातें जो हो रही हैं वो रही नंबर्स की बातें हो रही हैं। मैं साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट, तो मतलब मेरे दिमाग में वही रोज पेटल, एंथर, पॉलन, ये सब चलता था, और वहाँ वो मैथमेटिक्स की बातें होती थी, इसको ऐसे बढ़ाना है, उसको वैसे बढ़ाना, तो इसको किसको कैसे बढ़ाना है वो समझ में नहीं आता था। तो स्लोली ही यूज्ड टू वर्क विद मी, ही वर्क वेरी एक्सटेंसिवली विद मी। हम्म। I think that is the kind of induction I got. I am very fortunate, thanks to Mohinder Batra sir. And the fine tuning was done by him. Every step of the process was guided by him. So from making a DSR, that time we didn't have laptops or बिल्कुल mobiles, नहीं, हाँ। so हम हाथ से DSR भरते थे। हम्म। तो हाथ से कैसे लिखना है उस स्क्वायर के अंदर, कैसे दो चीजें कैसे आपने आइडेंटिफाई अब करनी है। डीएसआर क्या होता है? डीएसआर, ओके, या गुड क्वेश्चन। डेली सेल्स रिपोर्ट। ओके। आपने काम किया तो आपने कैसे उसको रिपोर्ट कैसे करोगे, व्हाट इज द प्रूफ ऑफ यू हैव वर्कड, सो दैट इज कॉल्ड डीएसआर, थैंक यू। डेली सेल्स मुझे रिपोर्ट। नहीं पता था। So actually FMCG is full of various Jargons. jargons, not jargons, I would say abbreviations. हाँ, abbreviations. So jargons तो हम not allowed, we are not allowed to speak because सामने वाला उस लेवल पे नहीं है कि वो हमें हमारे jargons को समझ पाए, तो हमारे को अपना लेवल जो है नीचे उसके लायक बनाना पड़ता था। So that is how it started. So he traveled with me extensively, and I remember after almost 6 months मेरा रुझान बदल गया था। I was one of the best people in the team. So somehow some energy came in. I remember, still remember that influx हुआ किसी energy का, और मुझे चीजें समझ में आने लगी। So that is where I think it was his blessings and my effort and the grace of God कि मुझे सिस्टम समझ में आ गया कि प्राइमरी क्या होती है, सेकेंडरी क्या होती है, टर्शरी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटर मैनेजमेंट क्या होता है, ऑर्डर कैसे लेना है, कौन सा सेल्स प्रोसेस फॉलो करना है, वगैरह वगैरह वगैरह, वो सिस्टमैटिक फिर वो होता चला गया। So I was very fortunate to have very wonderful distributors, and still one of them is a good friend of mine, Mr. Arvind Bansal from Aligarh, that for that matter. So we are still in touch. So start किया पीएनजी से, I think last job was with L'Oreal, right? Yeah. And then you have moved to this education. Yes. So ये कैसे हुआ? That's a very wonderful story.
सो एजुकेशन एक्चुअली अगर मैं देखूं तो मेरे फैमिली में एजुकेशन से सभी लोग जुड़े हुए हैं. My father started after completing his 10th in 1956. He became a teacher. He used to teach people who were senior to him. Then, when if I look at my mother, she was a teacher as well. She did BTC in 1967 from going from Chandigarh to Haridwar for 2 years, right? So she learned that. My wife is a teacher. My sister is a teacher. She's a professor with Melbourne University. She's done PhD there and all from there. My younger sister, she has a school she opened with my father. सो बच गया था मैं. तो मैंने जो है पहला जो मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसको मैं बोलूँगा कि हुआ वो हेंकल में हुआ जब मैंने पीएनजी से शिफ्ट किया हेंकल के लिए. तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे मिस्टर वी के सहगल. ही इज़ नो मोर, पीस टू हिम. And he made us sit for 4 days in a train the trainer program, which actually invigorated my sense of trainer. Okay. And then I had to go back and do 4 days of training for my 17 people at the young age of 26. Right? So that brought me the glimpse of what is the impact of training or education. And you will not believe we were given a target of 100 distributors in 3 months, and we were able to achieve that to open, because sales is all about distribution. Yes. If you don't distribute, if you don't have the right partners, you will not succeed. So thanks to Mr. V.K. Sehgal that I could join or think about training. Then I moved to Nepal. There also, it was a new operation altogether. And I was leading the country for sales and marketing activities as well. So we had to redo everything which we had done previously. So I see that cycle of life in that. जो आप करते हो वही आपसे करवाया जाता है जिससे आप और पारंगत होते जाते हो. For example, I give example of Rohit Sharma, Mahendra Singh Dhoni, Rahul Dravid, Yuvraj Singh, Sachin Tendulkar. All the year of their life they have been playing cricket. एक bat और एक ball, उसी से उनका पूरा जीवन निकल गया. So if you don't practice what you have, you can't be happy elsewhere. तो जो अब आप नाउ फुल टाइम यही कर रहे हैं, राइट? नाउ यू आर ट्रेनिंग यंग गन्स विद द सेल्स ट्रेनिंग, सेल्स एंड व्हाट नॉट. तो इसके पीछे क्या मोटिव क्या है? Okay. Yeah, motive is very simple and very pious. So basically, we all carry some spirit, some energy. That spirit and energy has to be channelized in a manner which enlightens the young souls. So that's the motive. So my mission and vision is also based on that. So I will do, whether it's less money, more money, no money. The important part is to carry on with this vision of carrying that torch, passing it on, and multiplying that torch. So that is the vision, and that is the reason I have been associated with ILM College, University, Jaipuriya Institute, ITS Ghaziabad, and Lloyd College. So I'm now working as a part-time faculty, visiting faculty with ILM, educating people on sales and marketing, sales strategy, marketing operations, Nice. and pricing and product promotions. So it's very fulfilling, very fulfilling. Good to know that. अच्छा, अब आपकी करियर जर्नी तो सुन ली, राइट? एंड इन दिस एंटायर करियर यू हैव बीन इनटू सिमिलर प्रोफाइल, राइट? सेल्स Yeah. एंड मार्केटिंग. तो व्हेन यू स्टार्टेड तब, एंड वे बैक, राइट, 30 years बैक, तब क्या एक्सपेक्टेशंस थी आपसे, राइट? एंड यू सेड कि यू स्ट्रगल्ड इनिशियली क्योंकि नेचुरली यू आर अ साइंस स्टूडेंट एंड कमिंग टू द सेल्स, नॉट एन ईजी थिंग. एंड वो भी उस जमाने में, राइट, जब हमारे पास लैपटॉप्स नहीं थे, जब हमारे पास टेक्नोलॉजी का इतना इंटरफेरेंस नहीं था, बहुत सारी चीज़ें मैनुअल थी. तब क्या एक्सपेक्टेशंस थी, और आज के दिन में जो लोग ज्वाइन करते हैं इस प्रोफाइल में, आप क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं? That time, the difference was totally on, the honesty was a factor
in terms of, because there was no day in day out kind of a check-in system. हाँ बिल्कुल So the boss, rather the senior, boss बोलना अच्छा लगता है क्योंकि सेल्स में रहे हैं, हाँ the boss always gave you a 1 year map with goals of quarter and month. तो एक महीने का आपके पास चार्टर आ जाता था कि आपको पूरे एक महीने में करना क्या है. आप पोस्ट कार्ड लिखते थे, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को चिट्ठी डालते थे कि मैं इस तारीख को आऊँगा, वो तैयार रहता था. दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर को चिट्ठी लिख, मैं कि 4 तारीख को आऊँगा, वो तैयार रहता था. तो इट वाज़ ऑल बेस्ड ऑन द कम्युनिकेशन. सो दैट हैज़ चेंज्ड, राइट? The other important aspect which has changed is there is more expectance of technology driven boys and girls. So they are very much into the technology, they would be knowing it. The only difference is that we were very good executors in those times. Now people are more of managers. So that's the difference. So that is where the fight has actually come in. So getting more revenue from the outlet, you have to actually follow your own efficiency and productivity. So that efficiency and productivity has to be delivered. So वो शायद मुझे लगता है कि अब वो एक fight आ रही है, because everybody wants to be sitting on the laptop and doing things rather than spending time in selling. नहीं बट अब तो इफ हम देखें तो जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी सेल्स एंड मार्केटिंग पे, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज पे, सेल्स स्ट्रेटजीज पे इतना फोकस किया जाता है. यू स्टिल थिंक दैट दैट इज अ चैलेंज? I think it is a challenge because people don't practice what is being taught to ओह them. ओके दैट So इज they go to an outlet with their sales representative, they stand out, and the sales representative is doing everything. हाँ हाँ So that is where we need to really show how the business will increase, and that is what we did in various organizations, especially in Del Monte, ICC Lombard, and L'Oreal for that matter. So we made that possible that you can get business if you are totally into that. For example, I talk about MS Dhoni. So he's playing cricket and he's having a phone in his pocket. So will he be able to play cricket with the focus? So that is what I meant by execution. So you have to have a single focus, single thought. I have to deliver my day. Then only you will be a champion. I call him champion of champions, like Ravi Shastri. So now when people are joining this sales and maybe you can define this sales profile as well कि होता क्या है, इनको करना क्या होता है इनिशियल डेज में? सबसे पहले तो यह है कि आपको अपने आप को खाली करके आना है. You have to empty your vessel, which I remember from when I started training with HUL. My journey of training started with HUL. So first day my grand master, जो टीचर थे, उन्होंने बोला कि आर यू विद द कप फिल्ड अप और आर यू एम्प्टी. तो समझ में नहीं आया कुछ, क्योंकि सेल्स में थे 10 साल, तो सारा दिमाग तो सेल्स की तरफ लगता था. अब ये साइकोलॉजिकल टेस्टिंग क्वेश्चन था, तो आई केप्ट लिटिल क्वाइट. आई सेड कि लेट सीनियर्स स्पीक. सो इन द मीन वाइल आई कुड अंडरस्टैंड कि इनका मतलब ये है कि यू हैव टू एम्प्टी योर सेल्फ, विच इज इवन अ प्रैक्टिस बाय श्री श्री रविशंकर जी. हॉलो एंड एम्प्टी की प्रैक्टिस होती है. सो यू व्हेन बिफोर गोइंग टू बेड यू हैव टू हॉलो योर सेल्फ. नींद अच्छी आती है ना? नींद अच्छी आती है, खाली कर दो. इसीलिए वो जर्नलिंग और राइटिंग वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत उससे आपकी सारी एनर्जीज जो है ना, वो जो नेगेटिव एनर्जीज होती है वो निकल जाती हैं. एंड दिस हेल्प्स. या तो वही था वहाँ पे. तो फर्स्ट थिंग इज दैट बी हॉलो एंड एम्प्टी. लर्न एज मच एज यू कैन, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट आई नो इट. It is about I have to do it. So that's the differentiator. So people believe in knowing rather than doing. So doing is important than knowing. Tendulkar knows to play cricket, but still he was hungry for 100 centuries. Right. नहीं बिल्कुल. अब एक स्टेप पीछे जाते हैं. जी जी. You have worked with so many FMCG companies, right? कितनी सेल्स स्ट्रेटजीज बनाई होंगी आपने. कोई एक ऐसी सेल्स स्ट्रेटजी जो कि यूनिवर्सली किसी भी प्रोडक्ट पर अच्छे से काम कर जाती है, आपने अपने करियर में करी हो? एक बेसिक मैंने NIS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेल्स में हमने सेल्स प्रोसेस सीखा था, जो मैंने लोम्बार्ड में भी यूज़ किया, लॉरियल
में 7 स्टेप का प्रोसेस था, डेल मोंटे में दूसरा प्रोसेस था, बट फंडामेंटली वही रहता है, विच इज कॉल्ड ODPEC, ODPEC. Open the call, develop the call, propose the solution, eliminate doubt and close. So this is universal. इसको आप 7 step, 10 हाँ, steps हाँ. कुछ भी नाम दे सकते हो. So this process is very simple. Even if you will go to a relationship, for that matter, when you sit with your father on a cup of tea, so you have to open up with some thoughts, praising him, praising his efforts, taking his blessings. You open that, and then you develop the entire conversation. If you want to ask him for 1 lakh of rupee also, because you want to close 1 lakh rupee चाहिए लैपटॉप खरीदने के लिए, कुछ और खरीदने, तो you will have to develop that totally, and then you have to close it. So open, develop, propose, eliminate and close, and that's your victory. And obviously इसके बाद reporting, वो रिपोर्ट देना बहुत जरूरी है. Otherwise the work is still pending. एक और चीज मैं बोलूंगा, जो DSR होती थी हमारे टाइम में उस समय, उसी के बेसिस पे आपको आपका भत्ता और आपकी सैलरी मिलती थी. तो वो बहुत जरूरी होती थी. वो ऑफिस में नहीं जाती थी, तो वहां से रिमाइंडर आता था कि आपकी 12 दिन की DSR पेंडिंग है, आपकी 6 दिन की पेंडिंग है. तो पता है आपको मंथ एंड में सैलरी में दिक्कत आएगी. मंथ एंड में सैलरी और आपके जो डेली एक्सपेंसेस होते थे वो आपको नहीं मिलते. बट आजकल ऐसा, कंपनी बहुत ग्रेशियस हो गई हैं, ओपन हो गई हैं. दे डोंट नीड अ DSR, दे हैव अदर सिस्टम्स. टेक्नोलॉजी अब तो सब कुछ फोन पे है. आपको जो भी रिकॉर्ड करनी है, सो लेट्स से CRM प्रोसेस सेल्सफोर्स है. आपने कुछ भी किया, आपने फोन पे अपना सेल्सफोर्स खोला और आपने रिकॉर्ड कर दिया कि अच्छा हमें इससे मिला, ये बात हुई, ये नेक्स्ट स्टेप्स है, वार्म है, हॉट है, लीड क्या है, वो डालकर आपने क्लोज कर दिया. सो दैट एटलीस्ट एवरीवन गेट्स टू नो कि है क्या, राइट. आप नाउ यू आर इनटू कोचिंग एज वेल. आई एम इनटू कोचिंग, मेंटरिंग आल्सो. यस. तो ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपको याद हो, जो आपसे बच्चे पूछते हैं, जो कि बहुत ही एक जेनेरिक क्वेश्चन है, सब किसी के दिमाग में होता है, जो कि आपको लगता है कि हाँ, जो नए लोग हैं उन्हें पता होना चाहिए. Basically, I am doing mentoring for Catalyst mentors for last more than 2.5 years now. I have 4 mentees which are coming from underprivileged section. So I am a devoted mentor to them. So I have 4 of them. One of them is very sharp, and she comes up with very beautiful questions. She actually hammers me to think more, better, sharper. So recently she asked about how can I develop myself after being a engineer. तो आपके वाला हिसाब हो गया ना कि आपने साइंस ली थी उसके बाद करा है. तो मैंने उसको यही बोला कि पहला सवाल यह था कि आप अपनी पहले तो पर्पस डिफाइन करो. व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर एग्जिस्टेंस, वेयर आर यू हेडिंग योर लाइफ टू. बेस्ड ऑन दैट पर्पस, क्रिएट अ विजन फॉर next 3 years where you want to see yourself. Then have a mission for at least 1 or 2 years. Yeah, I would get into this. Then create your goals. 3 year to 1 year, 1 year to quarter, 6 months, quarter, and 1 month, and every day, including the week. Yeah. And you will not believe she did that. And she has written a very beautiful mail recommending whatever I taught her in those sessions, and I was so thrilled because it's all about the purpose you carry. Every organization is born with a purpose. Yes. And we are here to serve, and initially I said that we are here to give, to win. So that is the purpose of life. There is no more purpose. So I have a interesting question. That's why I will just read it out. Which is the, like, because I'm again relating to this, your coaching and competency development. So what is the most common mindset or limiting belief you have encountered in young professionals these days? Because again, very, very interesting, because we all know that that's why the coaching and mentoring is required. Yeah, the belief, I think, is that the important part is that technology is ruling them. So when technology rules you, your mind is actually blanked. So you have to sit down and create your own action plans on pen and paper in the morning.
and then look at yourself that you can do it. So we think that WhatsApp कर दिया तो हो जाएगा, email भेज दिया तो हो जाएगा. You have to be consistent in your efforts. So you have to reach to the destination which is desired. And in the evening, you have to summarize your learnings which are coming out. What did I do for the entire day? So I think that review mechanism is not there. And even, the generation gap has come in hugely. So that is also a differentiator, because parents and kids association is little difficult these days, because thoughts doesn't match, because they're playing on a different level altogether. Kids are at different level. Parents have seen there was no cycle, there was cycle, there was no TV, black and white TV, color TV, slim TV. So the journey is different, the genre is different, the generation is different. So that is where the difference comes in. So when they come back, for example, I gave once my one of my mentee, she was actually going for a presentation. She was very nervous. She said, I have not spoken to anyone till I'm now in she's a engineering graduate. I said, nothing doing, take a newspaper, and read it loud in the front of the mirror for 15 minutes in the morning and 15 minutes in the evening. And खिंच निकल जाएगा. हाँ, टेक्निकली उसमें जो मुश्किल शब्द हैं वो उनको लिख लो, उनको डिक्शनरी में चेक करो, मोबाइल पे मत चेक करना, गो टू डिक्शनरी. सो पेन एंड पेपर की आदत डालनी पड़ेगी अगर परिवर्तन लाना है तो, बिकॉज एवरीथिंग एल्स एक्चुअली सीम्स फ्लिम्जी. सो दैट्स वेयर दे हैव टू कम आउट ऑफ दैट. सो दैट इज माय सबमिशन. गुड. एंड जो ये सेल्स का जो रोल है, ऐसे कौन से 4 या 5 स्किल्स हैं जो कि जो नए बच्चे जो इस जॉब में स्टार्ट करते हैं, तो क्या होने चाहिए, उनको क्या ध्यान रखना चाहिए? First and foremost, I will say, when you start your career, you have to be clear about what you want to achieve. First thing is that. And based on that, you need to have your own SWOT analysis. What are my strengths? What are my weaknesses? Weaknesses not in the terms of weakness, but the areas you want to learn. Right. And then, what are the opportunities in the area and what are the threats? Threats in terms of, will I be able to do it or not? And then moving on to, how to remove those threats. So that is one analysis. The second is creating your own goal map. That becomes very important. And third is having a mentor. Having a mentor in life helps you. I was talking to one of my teachers yesterday. She said there was another student to her, and she took 2 years regular mentoring as a teacher from her, and now she is principal of a great school. So that is the power of mentoring. Yeah. Have that somebody who can train you, guide you, mentor you, coach you, be with you, who understands you. So that is the reason in coaching and mentoring there is a chemistry session. So they are very important, because you are able to feel the vibes, connection, understanding, and then you move on. Any hard skills which they should really focus on when they are joining any sales profile? Yeah, there are 3 competencies. Okay. One is called behavioral competency. Second is functional competency. Third is technical competency. Right. So every competency can be divided into various parts depending on the organizational need. So we need to sit down and ask the HR, what are your competencies? Then based on that, you can create your own competency set framework, and then you can work on. For example, selling is the idea for a salesperson, right? He has to go and sell every day. So for him, interpersonal skills becomes the first thing. Second would be cheerful smile. Third would be introduction of himself to the retailer. Yes. Every time he goes, and multiple time he goes. So he does 40 retailers in a day. So he has to keep meeting people. Same अंतु के साथ भी. हाँ, same है वही. मैं वही बोलने वाला था. क्योंकि आधी चीजें तो वहीं खत्म हो जाती है. आप शाम तक आते आते यदि आपके चेहरे पे स्माइल चली गई, तो ये तो सेल्स वालों के लिए मतलब बोला जाता है कि यार तुम हंसते कैसे रहते हो हर समय. सेल्स वाले जो है ना, वो मेरे बॉस ने एक बार बोला था
कि आर्मी वाले ना ज़्यादा टफ होते हैं। मैंने कहा नहीं सर, सेल्स वाले ज़्यादा टफ होते हैं। कहते क्यों? मैंने कहा सर वॉर तो 3-4 ही हुई पिछले 50 साल की अगर मैं ज़िंदगी देखूँ, बट सेल्स वाले तो रोज़ 40 लोगों से लड़ने जाते हैं। अगर वो टफ नहीं होंगे, वो स्माइल कैरी नहीं करेंगे तो कोई भी कंपनी आगे नहीं बढ़ेगी। तो आई सैल्यूट all the sales walas Mm. and the passion, the fervor, the emotion they carry, and the dedication they carry. I had a guy called Sunil Duty Sharma. So he was always dutiful and always beautiful. He was always smiling. So that is how people, companies grow. Mhm. Companies grow by the front line. Yes. That's it. They are the bee for the honey or the hive you get. अच्छा, आपने अभी टेक्नोलॉजी के बारे में बोला, राइट, कि टेक्नोलॉजी ने बहुत चीज़ें चेंज कर दी Yeah, yeah. जब आप लोग थे। अब आजकल एक चीज़ चलती है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं हम, जी, जी। डेटा एनालिटिक्स की बात कर रहे हैं, तो इसने कितना चेंज किया है सेल्स को? अगर हम सेल्स के कई सारे स्वरूप हैं। अगर आप एफएमसीजी सेल्स की बात करोगे तो उसमें आपके पास प्लेटफॉर्म्स आ गए ऑनलाइन। हुँ, हुँ। उसमें आप अमेज़न आ गया या फ्लिपकार्ट आ गया, तो वहाँ से सेल्स हो रही है, मीशो वगैरह वगैरह, हुँ, राइट? हुँ। बट फिर भी मैं बोलूँगा देयर आर 80% ऑफ द कंज्यूमर्स हु स्टिल वांट लव टू गो टू द यू नो to the shop and buy. So that will be there. For example, I remember Kellogg's coming to India. They said within 5 years we will change the breakfast habits of Indians. हुँ, हुँ। But उल्टा हो गया। हुँ। उनको उपमा भी लाना पड़ा, इडली भी लानी पड़ी, दैट वे टाइप्स। तो इंडिया में you cannot move away without people. You can't have. So AI is something like antaryami, the हुँ। belief. God, we know everywhere He is there, but still we love to go to temple and hit the bell. So we love people, we love participating, we love being together. So that interaction, that level of connection is missing in AI. तो So मैं that's अब जैसे एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, हमारे पास दिन में कितनी कॉल्स आती हैं, जो सेल्स कॉल्स आती हैं, जो yeah, आईवीआर के थ्रू होती है, yeah. राइट? और एक सेल्स कॉल आती है जो कि आपके ह्यूमन बैठा है वहाँ पे। तो एआई ने कुछ तो, राइट, दैट इज़ नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट दैट इज़ एन ऑटोमेटेड टूल व्हिच इज़ देयर, जो कि आपको कॉल कर रहा है, आपसे पूछ रहा है, आप कुछ प्रेस करते हो तो वो इट विल जनरेट समथिंग एंड देन मे बी सम रिप्रेजेंटेटिव विल कॉल यू। बट एट लीस्ट सम पार्ट ऑफ इट हैज़ बीन टेकन ओवर बाय टेक्नोलॉजी। You're right. So, for example, I also get calls. I यस। get at least 3-4 calls जो वॉइस कॉल्स हुँ, होती हैं, और 4-5 कॉल मेरे को रोज इंश्योरेंस के लिए या हुँ, हुँ। किसी और चीज़ के लिए आती हैं। सो व्हेन आई एज आई लिसन टू द आईवीआर। IVR, I immediately disconnect it. हुँ, हुँ। But when I listen to somebody speaking, I am not sure who he or she is हुँ, and हुँ। what is the kind of need he or she is. So it gives me a reflection of something possible, something happening, something sharing. Because IVR would be mandated. यस। It will go with 20 words which they have been given. हुँ, हुँ। But when the person on the other side is sitting, he or she will think through, understand my question which I have asked, and then move into the direction where the deal is profitable or not. हुँ, He हुँ। or she will be able to talk about. But that's the difference between IVR में वो सब नहीं होता है। तो इवन वो अपने बॉस को ले आएगी हुँ, कि हुँ, सर हुँ। मेरे बॉस से बात कर लो, वो सब भी होता है ना आपकी राइट, कॉल में। सुपरवाइज़र तो है ही। Even when you make a call to even customer care for that matter, the frontline guy is not able to solve. He or she will bring the supervisor. या। If he is not able to do it, he will. Like I had a very wonderful case of Amazon. So we got a bad delivery. हुँ, हुँ। So मतलब fake delivery. हुँ, हुँ। So हमारे एक मित्र हैं मिस्टर रुचर श्रीवास्तव. So he is very he's a technology geek, right? हुँ, He हुँ। understands technology. He's into that domain altogether. So he helped me how to get through the process. बहुत clutter है actually. मतलब इट्स IVR के अंदर जाके फिर आप मैन या मतलब पर्सन को कैसे ले, मैन नहीं हाँ, बोलना हाँ। चाहिए, द पर्सन सिटिंग देयर, उसको उससे कैसे बात करोगे आप? हुँ, हुँ। वो सारा प्रोसेस उनको पता था, तो ही कुड हेल्प मी। सो आई कुड गेट माय
bogus laptop replaced by a, through his help, human effort by Mr. Ruchir Srivastava. He helped me in that. And fortunately, the other person on the side from Amazon was also very helpful. हम्म। He understood my pain. So, आप बताओ इसमें टेक्नोलॉजी क्या करेगी? हाँ, नहीं, नेचुरली आपको ह्यूमन टच तो चाहिए ही। ये सब हमने इसके बारे में हर एपिसोड में बात करी है। ये तो दोस्त है, राइट? इट विल हेल्प यू टू रिड्यूस योर वर्क इन सम वे, सो दैट आप कहीं और फोकस कर सकते हो। बट आपकी कोई जॉब कहीं ले नहीं जाएगा, वो जॉब तो रहेगी। I'll give you one example. दूध बिकता था, हम लोग गांव में जाते थे, दूध खरीदते थे, भैंस। अमूल आया, अमूल ने ऑटोमेशन किया, फैक्ट्रीज लगाई, तो क्या गाय भैंस खत्म हो गई? नहीं, नहीं। वो आर्टिफिशियल मिल्क तो ला ही नहीं सकते, तो उन्होंने टेक्नोलॉजी को बढ़ा दिया उन्होंने, बट प्रोसेस वही रहने वाला है। जो चीज़ें ग्राउंड की हैं, जो चीज़ें फंडामेंटली स्ट्रांग हैं, वो कहीं जाने वाली नहीं है। दिस वुड बी सुपर सुपर सुपीरियर लेवल पे काम करेंगी ये, एंड एवरीबडी मे यूज इट और मे नॉट यूज इट, डिपेंड्स ऑन हिज ओन एजुकेशन और क्लासिफिकेशन। नहीं, बट वो ज़रूरी भी है। एजुकेशन तो इसके लिए आजकल बहुत ज़रूरी है या कि आपको जो ये नई टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, यदि आपको नहीं पता तो आप नेचुरली आप पीछे रह जाओगे। देयर विल बी पीपल हु विल बी अहेड ऑफ यू। Definitely. The other point is that when IVR kind of thing or links kind of thing are sent, people are wary of that. They don't trust you. या, So then human touch becomes more important. थैंक यू। Thanks for sharing that. One last question before we get out of this topic, right? Sales wala. You are also involved in recruitment, right? Yeah. Currently and also in the past too for companies. So, what are 2-3 skills you look into people whom you are hiring for sales roles? First and foremost is the acceptance wala feeling. I am accepting the role which I am going into it. Right? Accepting in the sense that I have nurtured myself into that role. I am a fit person for that. So that comes through what you speak about. And second comes the mindset, which I talk about, open minded. And learning kitni le sakta hu main. Because when you are learning and implementing things, your senior would be happy with you. Because he has a task to deliver. His senior also has a task to deliver. So that alignment is important. First is that, second is that, and third is your interpersonal skills. And fourth is your daily planning. What I am doing for the day. What does this day stand for me? How important it is. So I cannot win until I plan my day. So I have to keep planning my day, put into my 100% to achieve the goal. Because every day makes you important for the next day. If you have not done, you will not be happy next day. It's like I give very beautiful example in my trainings or my school or college also. टीचर होमवर्क देती थी, आप करके जाते थे, तो आप अच्छे बच्चे थे। बिल्कुल। क्लास वर्क देती थी, आप करते थे, अच्छे बच्चे थे। वैसे ही जीवन है, आपको रोज एक होमवर्क भी मिल रहा है, क्लास वर्क भी मिल रहा है। अगर आप उसको नहीं करोगे, आप पीछे रह जाओगे। और उसको एनालाइज आपने ही करना है, क्योंकि अब आपके पास टीचर नहीं है। तो आपको अपना टीचर भी बनना पड़ेगा और आपको ही अपना काम पूरा करना पड़ेगा। पेरेंट भी अपना बनना पड़ेगा, बिकॉज पेरेंट्स ऑल्सो नॉट अवेयर ऑफ वॉट यू आर डूइंग। फॉर एग्जाम्पल, माई सन हैज बिकम अ CA. So I don't understand his mathematics, right? So he has his own thoughts, his own world. So he has to do his job on daily basis. I can't help him. So that is where it comes to. So first and foremost is your own discipline. Am I disciplined to do things? Am I disciplined to do everything? Because that is where the difference comes in. My life, if I would talk about, has been based on one principle given by my father, which is he has a very beautiful thought, or I would say a शेर। मिटा दे अपनी हस्ती अगर मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती अगर मर्तबा चाहे,
दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है, right? Then he explains this by saying, if you are a seed and you do not penetrate into the soil and don't let soil disrupt your covering, you will not become a plant, you will not be an embryo, you will not grow. So you have to that is the reason I said कि people have to be open minded and then they have to be disciplined कि नहीं मुझे रोज ग्रो करना है. वो ग्रोथ वाला फैक्टर मेरे पास आना चाहिए, वो मेरे दिमाग से आएगा, मेरे मन से आएगा. अगर वो नहीं आएगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा. तो दैट इज द रीजन यू हैव टू जस्ट सरेंडर योरसेल्फ टू द सिस्टम. आर्मी में क्या होता है, यू जस्ट सरेंडर टू द सिस्टम and you let the process take the charge. Yeah. So process is important. You have to follow that to the T. Great. Thank you. Thanks, Arvindji, for that great conversation. We will close this section here. And I will request my audience that if they like the entire conversation, please like, share, and subscribe to the channel. And do share the feedback as well, right? So now we will move into the next section, which is unwind. And here we will not talk about sales now. इस सेक्शन के शुरुआत करते हैं कि do you have any book which has changed your life? I have two books. One is Srimad Bhagavad Gita, and second is 7 Habits of the Highly Effective People by Stephen Covey. Great, thank you. 30 plus years का long career है, right? आप work से unwind कैसे करते हैं? हाँ, that's a beautiful question. I love cricket because 83 का वर्ल्ड कप मैंने लाइव देखा था जब हम ALT सेंटर गाजियाबाद ALTTC जो एडवांस लेवल टेलीकॉम ट्रेनिंग सेंटर में रहते थे. तो वहाँ पे एक सुभाष बोल के हमारा वो था हॉस्टल था, तो उसमें हमने वो देखा था लाइव. इट वाज अ वंडरफुल डे. मतलब हमने लाइव देखा क्या मतलब 83 में फॉर्च्यून. और मैं भी थोड़े दिन पहले वापस वो सेंटर में होके आया था, मुझे बहुत नॉस्टैल्जिक फीलिंग आई. सो आई अनवाइंड बाय प्लेइंग क्रिकेट विद किड्स. आई लव किड्स. सो एंड देन आई प्ले बैडमिंटन दीज डेज. आज सुबह भी बैडमिंटन खेल के आया हूँ आपके पास. और आई लव चेस. आई प्ले विद माई इनिशियली विद माई फादर, देन विद माई younger brother, though he was a special child, but he used to play with me. So, and he used to feel very happy. His name is Raman. And then my wife came into my life and she made me a champion, I would say, because मैं बहुत गलत खेलता था. I was very ruthless. I was not strategic. So she made me think strategically. Because आदत होंगी तो फिर वो लगता होगा क्योंकि पापा ने कहा था कि because he was an army man, तो वो हाथी को दौड़ाते थे और ऊंट और घोड़े को कम यूज करते थे. तो वाइफ सेड कि रानी को बचा के रखना, आप अपनी रानी बहुत जल्दी सैक्रिफाइस करते हैं. तो मैंने कहा यार रानी तो मेरा प्यार है. तुम आ गई तो मेरी रानी बच गई. और दूसरा मैंने 2015 5th of September से आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन किया. ओह नाइस. सो वो बहुत बड़ा परिवर्तन मेरे अंदर आया. सो आई एम थैंक्स टू माय फ्रेंड दीपा जी, अनुकूल जी एंड श्री रविशंकर जी for that matter. So it has brought a different thought process. I think I have transformed. Nice. So that's good to know, right? क्योंकि अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट भी बहुत जरूरी है. सो अनवाइंड करना, कॉर्पोरेट लाइफ में हम कई बार फंस जाते हैं, राइट? तो उससे निकलने के लिए बहुत सारे गेस्ट हैं जिनसे मैंने क्वेश्चन पूछा तो कहते हैं हॉबीज अब तो कुछ नहीं है. मेरी हॉबी में एक और भी है, बुक्स. Today also I'm carrying 4 or 5 books which I'm reading intermittently. So I can see books here as well. So I love books and मेरे को बैन लग गया किताब खरीदने पे, फिर भी मैं चोरी छिपे खरीद लेता हूँ. Because books are the best friends. That is what Mahatma Gandhi said. आपके बच्चे, आपके फ्रेंड्स वो क्या कहते हैं, आप क्या काम करते हो? How they describe what you do? I don't know. I think I should put a Google sheet. Actually, मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स नहीं रहे कि मैं बोलूँ कि 2-4 फ्रेंड्स हैं. मेरी पूरी क्लास ही फ्रेंड होती थी.
मेरे मतलब स्टिल आई हैव अ ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल सेल्स प्रो प्लस बोल के हमारा ग्रुप है, उसमें 200 से ज़्यादा मेरे फ्रेंड्स और कलीग्स हैं उसमें। ऐसी कुछ और अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, तो आई थिंक they will say, like, one friend of mine said in my LinkedIn recommendation, Arvind is a happy guy or a nice guy. So हम्म। I am a nice and happy guy. मैं आई थिंक इतना इतना भी है तो आई थिंक इट्स गुड इनफ। अभी हमने बहुत सारी डीप बातें करी हैं, तो उसी से ही रिलेटेड एक चीज पूछता हूँ। व्हाट इज सक्सेस फॉर यू? हम्म सक्सेस एक्चुअली मेरे लिए 3 डायमेंशंस पे है। पहला डायमेंशन आता है कि मेरे को करना क्या है। हम्म। मेरे को सक्सेस तभी मानी जाएगी ना जो आपने सोचा, प्लान किया, स्ट्रैटेजाइज किया और एक्शन में इम्प्लीमेंट कर दिया या। और रिजल्ट क्या आया, राइट? तो रिजल्ट बाद में आएगा, बट पहले मेरा इनिशिएटिव क्या है, मैं हम्म। उसको कितना दे रहा हूँ। एम आई गिविंग एवरी मोमेंट द 100%? सो दैट इज सक्सेस फॉर मी। मैंने मान लीजिए बैडमिंटन खेला और आज एक शॉट ऐसा था कि हम 4 लोग खेल रहे थे, तो एक शॉट ऐसा था कि पीपल थॉट आई विल नॉट बी एबल टू पिक। पिक अप एंड उधर जाएगा नहीं। तो तीनों जो बाकी जो मतलब एक तो मेरा पार्टनर हम्म। और वो सामने वाले कॉम्पिटिटर्स सब हैरान थे कि वो शॉट वहां पहुंच गया पहुंच। मतलब। सो यू नो दैट इज सक्सेस फॉर मी। इफ यू आर एबल टू डिलीवर एवरी मोमेंट, देन इट बिकम्स योर साइकी, एंड देन यू बिकम लाइक तेंदुलकर और युवराज। 6 छक्के मारना आसान नहीं था। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। राहुल द्रविड़ के लिए इतनी द वॉल बोलना किसी के लिए और कपिल देव के लिए हरियाणा हरिकेन बोलना इतना हम्म। आसान ही था। और फॉर महेंद्र सिंह धोनी हेलीकॉप्टर शॉट, हम्म। द कूल कैप्टन कूल। सो ही ऑल्सो सेज प्रोसेस। सो इट्स ऑल अबाउट प्रोसेस। इफ यू फॉलो द प्रोसेस देन लाइफ इज गुड, इफ यू डोंट फॉलो द प्रोसेस इट इज chaos। ऐसा कोई आपने अभी आपने भगवत गीता की बात करी, राइट? ऐसा कोई लेसन जो आपने अपनी लाइफ में अप्लाई किया? श्रीमद् भागवत गीता का सबसे बड़ा, आई विल टेक यू टू अ स्टोरी। एक्चुअली आई वाज नॉट इनटू me and myself हम्म। during 1991, because बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, मंडल कमंडल एंड ऑल दैट। सो आई वाज आल्सो काइंड ऑफ डिस्टर्ब्ड और perturbed। आई वेंट टू देयर वाज लखनऊ में हमारे वहाँ पे एक निराला नगर में रामकृष्ण मिशन मठ था। हम्म। आई वेंट टू दैट मठ एंड आई सैट देयर, जो मेन टेम्पल का है। अभी मैं लास्ट ईयर दोबारा होके आया जस्ट टू पे माई ग्रैटिट्यूड टू दैट। हम्म। तो वहाँ श्री स्वामी श्री धरानंद थे, तो वो बैठ के उपदेश दे रहे थे। मैं चुपचाप बैठ के जाके बैठ गया वहाँ पे। तो जब पूरा पाठ खत्म हो गया तो उन्होंने बुलाया मेरे को, बात करी। तो उन्होंने बोला कि क्या करते हो आप? मैंने कहा मैं अभी स्टूडेंट हूँ और थोड़ा सा भटका हुआ हूँ, परेशान हूँ। उन्होंने पूछा कि श्रीमद् भागवत गीता है घर में? मैंने कहा हाँ है सर। पढ़ते हो? मैंने कहा नहीं। तो फिर उन्होंने एक सवाल किया, मंदिर जाते हो? मैंने कहा हाँ। कुछ लेके जाते हो? नहीं। कि जब कुछ लेके नहीं जाओगे तो वो मिलेगा कैसे? हम्म। So it's a process of give and take. God is your friend. You have to give him time, give him space. He will give you back the energy, the joy, the happiness. और हमें वो रोज पढ़ना है। हम्म। तो वही जो कर्म की बात आ गई, फिर से जो सेल्स की बात आ गई, मुझे वो 40 दुकानें करनी है तभी मेरी सक्सेस होगी दिन की। तो वही वही छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो उन्होंने ये बोला तो मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि अब मैं, आई विल नॉट बिलीव, आई स्टिल रीड Srimad Bhagavad Gita intermittently, but I want to keep doing that. और दूसरा, I started carrying something which I could offer from my हम्म। capacity, from a student to a so to the temple. And even I remember my brother, though he was a special child, he used to go to temple twice a day when he was staying with me. So सुबह उठता था 7 बजे, नहा धो के मंदिर जाना है, तो स्पेशली वो प्रसाद लेके जाता था। हम्म। और शाम को
फिर जाता था तो प्रसाद लेके जाता था, और पूरे आदर सत्कार के साथ वो नीचे उसको रखता था। ये नहीं कि मतलब ये मतलब अंडरस्टैंड दी साइकी कि वो धीरे से प्यार से उसको नीचे, जैसे होता ना श्रद्धा, हाँ, पूर्ण हाँ। श्रद्धा से उसको रखना। सो दैट इज वेयर द गिविंग कम्स इन. You may do an action, but it has to be complete. If it is not complete, then you won't get the right results. Like the World Cup we lost. Right. Let's not go there. So I know my son feels very offended. yeah. So Papa, आप वो मत छेड़ा करो. yeah, with that note, I think we will close this section too. And thanks a lot, Arvindji, for being my guest today on the show. Thank you. Thanks, Arvindji. Thank you. So this was our episode with Arvind, where he has shared so many life experiences, not just about sales and how and what we need to do कि हम एक अच्छे सेल्स प्रोफेशनल बन सके, बट हम एक अच्छे इंसान भी बन सके, राइट? सो हमने आज बहुत कुछ सीखा, एंड हम ऐसे ही मोर टॉपिक्स लाते रहेंगे आगे भी आप लोगों के साथ. हम व्हाट वी नीड फ्रॉम यू इज प्लीज शेयर द फीडबैक सो दैट वी कैन इम्प्रूव and we can bring more such topics which are relatable for you, right? And do not forget to share, like, and subscribe our channel. And also, if you have any feedback, below are the links you can share with us on Gmail, Instagram, and YouTube, and on LinkedIn too, right? So do share that. And with that, we will close this episode here, and we will be back next week with another fascinating episode. Thank you. Signing off from now, Abhishek Mittal from Wisdom Whispers.